सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि वो मंच पर पधारें और मंच को सुशोभित करें। माननीय उपकुलपति आदरणीय श्री योगेश सिंह जी से मंच का संचालन करने की अनुमति चाहूँगी। थैंक यू। स्या रात नहीं नाम लेती ढलने का, स्या रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। A very good afternoon, स्नेहपूर्ण नमस्कार to one and all present here. I, Jyoti Trehan Sharma, on behalf of the University of Delhi, extend a very warm welcome to our chief guest, Shri Ram Madhav ji, Governing Board Member, India Foundation, New Delhi, to this workshop-cum-book discussion on independence and partition of India, featured through his authorship of Partitioned Freedom. We also have with us respected Vice Chancellor Sir, Shri Yogesh Singh ji, Director South Campus, Professor Shri Prakash Singh ji, Registrar, University of Delhi, Shri Vikas Gupta ji, and Joint Director, South Campus, Shri Sanjeev Singh ji. We are humbled by your gracious presence. I also extend a very warm welcome to our esteemed audience this afternoon. I request everyone to rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। To invoke divine blessings, I cordially invite our chief guest, Shri Ram Madhav ji, and other dignitaries on the dais for lighting of the lamp. Asto ma sadagamaya, tamso ma jyotirgamaya, mrityurma amritam gamaya. Lead me from the untruth to the truth. Lead me from darkness to light. Lead me from death to immortality. Our chief guest this afternoon, Shri Ram Madhav ji, needs no introduction. Ram Madhav ji is an Indian politician, social leader, author, and thinker. Dr. Madhav is a founding member of the Governing Council of India Foundation, a New Delhi-based think tank. In over a decade of India Foundation's existence, Dr. Madhav has been the curator of major annual global and national multilateral initiatives like the Indian Ocean Conference, the Dharma Dhamma Conference, the ASEAN India Youth Summit, and Counter-Terrorism Conference involving heads of nations and leaders of governments, besides academicians, scholars, and public-spirited individuals. Dr. Madhav has served as the National Secretary of the Bharatiya Janata Party during 2014 to 2020. In that capacity, he handled political affairs of Jammu and Kashmir, Assam, and other northeastern states of India.
A renowned author and thinker, Dr. Madhav has over 300 publications to his credit. He has authored several books in English and Telugu that include The Hindutva Paradigm, Integral Humanism and the Quest for a Non-Western Worldview, Because India Comes First, Reflections on Nationalism, Identity and Culture, and Uneasy Neighbors, India and China After 50 Years of the War. His new book, Partition Freedom, explores the untold story of the India's partition in 1947 and the birth of Pakistan. He is a regular contributor to platforms like the Indian Express, the Hindustan Times, and Open Magazine, among others. He had been the editor of Bharatiya Pragna, a monthly magazine in English published by Pragna Bharati, and associate editor of Jagrati, a Telugu weekly. Widely regarded for his contributions in the field of strategic thinking, political philosophy, and India's foreign policy, Dr. Madhav has traveled widely and addressed forums like the Shangri-La Dialogue in Singapore, Halifax Security Forum in Canada, Sochi Eurasian Integration Forum in Russia, BRICS Political Forum in China, and the World Peace Conference in Thailand. We welcome you, sir. The discussion today is chaired by our own Honorable Vice Chancellor, Shri Yogesh Singh Ji. Sir, the 23rd Vice Chancellor of this century-old university assumed the charge of the Vice Chancellor on 8th October 2021. He is an academician par excellence, a decisive leader with the courage to dream big and bring change, a beloved educationist who has touched the lives of innumerable number of students as well as his colleagues and peers. Leadership is not about oneself. It's about investing in the growth of others, a quote that well expresses his passion and dedication towards the betterment of all. His leadership quality and administrative acumen and caliber has been exemplified by various experience of leading academic institutions. He has a proven track record and experience of leading prestigious institutions of diverse nature, starting from a large-size, multi-faculty unitary university of 40,000 students in the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, to technology-oriented, distinguished and reputed institutions like Netaji Subhash University of Technology and Delhi Technological University. Professor Singh has an impressive track record of quality teaching, innovation and research in the area of software engineering, with H index of 33, citation index of 3789, and has supervised around 23 PhDs. He is listed as the third best among the most productive Indian authors for participating in software engineering research reported in Indian Computer Science Research Output during 1999 to 2008. Qualitative Analysis, Journal of Library and Information Technology, November 2010. He has more than 250 publications in international and national journals and conferences. His book, Software Testing, published by Cambridge University Press, England in 2011, is a well-received book nationally and internationally. He has also co-authored books on software engineering, published by New Age International, Delhi, and Object-Oriented Software Engineering, published by PHI Learning, Delhi in 2012. He has always had a holistic approach to education and an exemplary team player who has passed on his wisdom upon anyone who has crossed path with him, with only one agenda: to impart knowledge. He is not just a visionary in his field, but also a praiseworthy administrator. He has the courage to take decision where others hesitate, all for protecting the interest of the institution. He has done justice to all positions with such admirable grace and calmness that he is an inspiration to all. We seek your blessings, sir. May I kindly request the Vice Chancellor, sir, to felicitate our Chief Guest, Shri Ram Madhav Ji.
थैंक यू सर, वी आर ऑनर्ड। इस सारे समारोह को अपना चिंतन, मार्गदर्शन और उत्साह प्रदान करने वाले एक कर्मठ व्यक्तित्व के धनी मंच पर आसीन डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगी स्वागत भाषण के लिए। सर। धन्यवाद ज्योति। इस कार्यक्रम की नींव बहुत पहले पड़ी। आदरणीय राम माधव जी की किताब की जैसे ही सूचना मिली, पार्टीशन इंडिया, पार्टीशन फ्रीडम, तो ये लगा कि इस पर चर्चा ज़रूर करनी है। चर्चा कैसे करनी है वो तय नहीं हो पा रहा था। तो भारत सरकार की तरफ से एक संदेश मिला कि आप पार्टीशन हॉरर डे विश्वविद्यालय में सेलिब्रेट करिए। और फिर उसी कार्यक्रम की तैयारी में ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने कहा कि कुछ और भी पत्र आए हैं जिसमें कुछ सेंटर शुरू करने का भी विचार आया है, सोचना आरंभ करिए। और आपके दिशा निर्देश में एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का काम फिलहाल मेरे पास है, सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज। एक केंद्र बनाने का विचार दिल्ली विश्वविद्यालय में है, जिसका कॉन्सेप्ट नोट आप सबके पास पहुंच चुका है। फिर यह हुआ कि आदरणीय राम माधव जी की किताब भी है, और जितने लोगों को मैं जानता हूं शायद उनसे ज्यादा वाइडली रेड व्यक्तित्व बहुत कम हैं। आपका समय बड़ी मुश्किल से मिलता है, वाइडली रेड भी हैं, वाइडली ट्रेवल्ड भी हैं, और पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस नाते आज शनिवार का दिन हम सबने पकड़ा और आपसे आग्रह किया, आप हमारे बीच हैं जिनको हम सब सुनेंगे। और जब मैं ये कह रहा हूं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ एक सच से परिचित करा रहा हूं। आप उनको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हमने कितना कम पढ़ा है। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं। When he writes on certain political issues and integrates the opinions and citations of across the words, तो लगता है कि हमने तो इतना पढ़ा ही नहीं जितना आपने पढ़ा है, जितनी citations आप देते हैं। He is political scientist। आपकी political science MA में है, no doubt। आपकी इंजीनियरिंग की शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद आपने पॉलिटिकल साइंस में स्नातक किया। तो मुझे लगता है कि जितना पॉलिटिकल साइंस भाई साहब को आती है, आपको आती है, उतनी तो हमें भी नहीं आती, जबकि हम तो रोज पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि जो साइटेशन, जो रेफरेंसेस आप निकाल करके आते हैं, वो एकेडमिक्स में मिसिंग हैं। और ये मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, उस एकेडमिक्स का हिस्सा मैं भी हूं। आपका पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, साउथ कैंपस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, मुझे तो लगता है सर कोई काम मना करते ही नहीं। आप उनके पास प्रपोजल लेकर के जाइए, प्रपोजल में अगर वर्थ है तो विद इन सेकेंड ही टेक्स डिसीजन एंड अलाउज अस टू फंक्शन प्रॉपरली विथ ऑल इंडिपेंडेंस। और उस इंडिपेंडेंस का नतीजा है कि आपकी हां होती है, हम कुछ एग्जीक्यूट कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। विकास जी मंच पर हैं, संजीव सिंह मंच पर हैं, बोथ आर टीम मेंस। मैं कुछ भी लेकर के जाता हूं, कुछ भी चर्चा करता हूं तो कहते हैं आप करिए ना, साथ तो खड़े हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं फैकल्टीज को देख पा रहा हूं, प्रोफेसर कौल को, प्रोफेसर संजीव कपूर साहब को, प्रोफेसर मैडम को
आप सबको लैब से निकालना बड़ा मुश्किल काम है। आपने हमारा इनवाइट स्वीकार किया, आप आए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। तमाम प्रिंसिपल्स, राजीव जी, विपिन जी, रवि जी, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, प्रमोद जी, जेएनयू से भी तमाम फैकल्टी आई हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं इतना कह सकता हूं कि जो सेंटर हम प्लान कर रहे हैं वो अपने आप में एक नायाब सेंटर होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका ब्लूप्रिंट हम दिसंबर मंथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अप्रूव करा लेंगे। Those who have faced the partition, victim of the partitions, they are the last leg of their lives. बिल्कुल पैर लटके हुए हैं। तमाम लोगों की स्मृतियां, तमाम लोगों के अनुभव हमारी जानकारी में नहीं है। What they faced, what they did, and how they managed their life, and there are various success stories of the victim families. Mainstream historians have done great injustice to them, and our effort is to provide them certain platform where they can record their views, their opinion, their suffering, their belonging, their whatever they face in life. और एक ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी विद इन फ्यू मंथ्स लेकर के आएगी और मुझे लगता है कि जल्दी हम उस पर काम शुरू कर देंगे। हमने तमाम लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिया है और जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पार्टीशन हॉरर डे पे कार्यक्रम कर रहे थे तो मुझे तमाम विक्टिम्स मिले। वो हमारे साथी भी हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। तो जब मैंने किसी से कहा कुछ पार्टीशन विक्टिम्स से मुलाकात करा दीजिए तो बोले हम भी तो हैं। ऑलमोस्ट एवरी फैमिली दोज हू केम टू इंडिया आफ्टर पार्टीशन सफर्ड अ लॉट। और जिस जगह दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रित है उसके इर्द गिर्द के जो मोहल्ले हैं वो सब उस फेज के लोगों के द्वारा बसाए गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, तो रिफ्यूजी बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब हम इतिहास टटोलते हैं, दयाल सिंह कॉलेज उसी तरह का एक कॉलेज है जो रिफ्यूजी बच्चों के लिए बनाया गया था। जब हम इतिहास टटोलते हैं तो ये चीजें नहीं मिलती हैं। तो इस सेंटर में हमारी पूरी कोशिश होगी कि उन सभी बातों को शामिल किया जाए जिसे मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस ने शामिल नहीं किया है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस बहुत सफरिंग के बाद आई है, बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद आई है। तमाम ऐसे हीरोज हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा इस मंच से भारत सरकार का। आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना करके तमाम ऐसे नेशनल हीरोज से हमारा परिचय कराया जो मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स का हिस्सा नहीं थे, जिन पर किताबें नहीं थी, आर्टिकल्स नहीं थे। किताबें तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस। उड़ीसा का एक छोटा सा नाविक 11 साल की उम्र है, क्रांतिकारी नदी पार करके भाग रहा है। उसकी नाव पर 4 पुलिस पर्सनल्स राइफल लेकर के खड़े हैं। उस लड़के को रियलाइजेशन होता है कि अगर मैंने इनको नदी पार करा दी तो उस क्रांतिकारी को मार देंगे। वह जानबूझकर अपनी नाव ऐसी जगह ले गया जहां पानी का प्रवाह बहुत तेज था और जब तक उन ऑफिसर्स को रियलाइज हो तब तक वह क्रांतिकारी नदी पार कर गया और उन्होंने क्रोध में उस बच्चे को गोली मार दी। उनको लगा कि इसने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन उस बच्चे ने धोखा नहीं किया था। उस बच्चे ने एक क्रांतिकारी की जान बचाई थी, नाविक का कार्य करता था, अपनी तरह से उस राष्ट्र की सेवा की थी। अब सोच करके देखें, ऐसी हजारों कहानियां हैं जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, लिखा नहीं गया, जाना नहीं गया, बताया नहीं गया। तो इस सेंटर की खूबसूरती यही होगी
इस तरह के प्रश्न और विचार सब कुछ शामिल करेंगे। आप सब आए, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Shri Prakash ji, for your welcome address. The University of Delhi has completed 100 brilliant years of academic excellence, being cradled, fostered, and nurtured by the geniuses of uncompromising characters. We are blessed to look forward to the competent leadership of our Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh ji, whose vision is steering every member, participant, and stakeholder to overcome hurdles and create milestones. A compassionate personality, he does not build infrastructures alone, but human relations and identities. आमंत्रित करना चाहूँगी आपको सर कि आप इस विषय पर अपने विचारों को साझा करें। थैंक यू सर। क्या गिरा? Good afternoon to all of you. Distinguished and outstanding son of India and my old friend Shri Ram Madhav ji, Professor Shri Prakash, Director, University of Delhi South Campus, Professor Sanjeev Singh, Joint Director, University of Delhi South Campus, Dr. Vikas Gupta, Registrar of the University, Principals, Head of the Departments, Directors, Deans, respected faculty members, invited guests, my dear friends and my dear students, good afternoon to all of you. So today we are here to discuss about a book written by Shri Ram Madhav ji, Partitioned Freedom. This is a very, very different but very important book. I would like to thank my friend Ram Madhav ji for writing such a wonderful book. I have read the book. I also understood the book. When I was going through the book, my eyes were struck on the first chapter title. Nobody wanted it, but nobody stood up. Nobody wanted it, but nobody stood up. It's a very thought-provoking. Nobody wanted it, but nobody stood up. Nobody wanted from Indian side, yes, but Muslim League wanted. Nobody stood up, then the question arises, why? This why is very important. Why nobody stood up? No Indian, on 15th August 1947, no Indian slept that night. Some were busy in celebrations. Some were confused, some were worried, some were helpless due to chaos, some were in pain, some were thinking about the future of their families and the future of India, but nobody stood up. Some were busy here and there, but nobody stood up. How many died due to this partition? How many died? Nobody knows. Nobody made a list. Official list is also not available. We can speculate only. In Punjab alone, it may have been 500,000 killed. More than 5 lakhs people killed in Punjab only. This independence was delivered to millions of innocent Indians in a different way. Such a good quote by Ram Madhav ji, because destruction of property, raping and kidnapping of their women in front of their eyes. We can easily imagine the situation, such an horror. Incineration of their homes, murders and killings of innocent Indians. Millions were uprooted. Millions were uprooted. No one stood up for them also. Why? After 75 years of independence now, time has come. We have to think about this. Why we have to think about this? Why?
That I will discuss after some time. But the point is, why did this tragedy take place? Who are responsible and who were responsible for this tragedy? Many were disturbed. Many were displaced. Nobody stood up. Sir Cyril Radcliffe was Mr. Radcliffe was a young lawyer in London. One day he was appointed as the chairman of the Boundary Commission. He came to India on July 8th, 1947, just 37 days before independence. He came to India. That was his first visit in India. He was having no idea about Indian culture, ethos, systems. Everything was very new to him. He also said that I have not seen map of India before coming to this place. But his report was released. Submitted first in August 12th, after 36 days. And it was released on August 17, 1947, 2 days after independence. It means what? On 15th August, nobody knew. People were speculating. Some people might have some idea about the whole thing, but the common persons were confused. Where to go, how to go, what would we do? It could have been easily avoided. But why it happened? But reality is nobody stood up. India Independence Act 1947 came into force on July 15, 1947, we all know. Winston Churchill, who was the Prime Minister, but he lost election after Second World War. And he became the leader of opposition in British Parliament. When this bill came for discussion in British Parliament, actually Churchill was against granting freedom to India from the very beginning. He was deadly against India and Indians. And he said, which Ram Madhavji has rightly quoted, Mr. Clement Attlee, Indians are incapable of ruling themselves. Power will go into the hands of rascals, rogues, and freebooters. The blood of these hungry millions will be on your head. Why do you want to take this? He further said, these Indians do not understand even D of democracy. If you give power to them, there will be chaos in the whole system. Who will be responsible? You will be responsible, Mr. Attlee. But after the debate, and because Attlee government was for the independence due to many reasons, we got independence. But after 75 years of independence, now we can confidently say, Mr. Winston Churchill, you were wrong on that day. India is the largest and deepest democracy of the world. We not only practice democracy, but we also inspire and ignite many other countries to practice democracy. We have proved you wrong, Mr. Churchill. But the partition had not only created two countries, but also two enemies. Cyril Radcliffe later said in London, I had no alternative. The time at my disposal was so short that I could not do a better job. Given the same proposal, I would do the same thing. However, if I had 2 or 3 years, I might have improved on what I did. It means what? He wanted 2 to 3 years, but the job was completed in 36 days. We easily can understand now, after 75 years of independence, what could have been better. While nobody wanted partition of India, nobody was there to stand up against it when the real movement came. Many people were against partition. Many have written books also. Many had expressed their views prior to partition. But
when real movement came, nobody stood up. Why? After 75 years of independence, this why should be discussed on academic platforms, universities and higher education institutions. I am extremely thankful to my friend Ram Madhavji to write a book on this subject, that Indian universities now we should discuss this. Why? Many questions are unanswered, or because why they are important. Why they are important? Because we don't want to repeat those mistakes. Ram Madhavji has indicated to a very intriguing fact that in 1905, when the partition of Bengal was announced by British Raj, an all India movement under the leadership of Lal Bal Pal vigorously put resistance and ultimately forced the government. After 6 years, in 1911, the decision was withdrawn. But when Jinnah took a call for a partition, the whole national leadership failed to prevent it. They did not even voice. There was no, articles were also not written. It means what? Slowly and steadily something had happened. But actually, what was the position of Jinnah? This is very important. We have to understand this. What was the position of Jinnah? Muslim League has miserably lost in Muslim constituencies in the provincial elections of 1937, because Government of India Act 1935 came in force in 1937, and first these provincial elections took place, and Muslim League was defeated in Punjab and Bengal. They just got 4.8% of the vote. Union's party in Punjab and Krishak's Praja Party in Bengal, both Muslim parties were victorious, but they were not party to the whole thing. They were not invited for any discussion. Why Jinnah became the sole proprietor of Muslim identity and voice? This why is also to be discussed now after 75 years of Indian independence. Muhammad Iqbal, when this defeat came, this Iqbal suggested Jinnah to change now, please change the epicenter. Because now your focus is, he said, constitutional safeguards for Muslims. And our author has beautifully explained this, that now please change this constitutional safeguard for Muslim to cultural incompatibility with Hindus. Cultural incompatibility with Hindus. We don't want to live with Hindus. Because constitutional safeguard, because they just lost this election, they were not having any ethical and moral authority in the Muslim society also. He advised Jinnah to appeal, that please appeal to the Muslims that established law of Islam. This Muhammad Iqbal, जिसने क्या लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ऐसे ही था ना? यूनान मिश्र रोम सब मिट गए जहां से, पर अब तक है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा. इतनी अच्छी बात लिखी, मानी नहीं, करी नहीं, एंड ही बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान. तो ये गाना हमको क्यों गाना चाहिए? ये हमको क्यों गाना चाहिए? हम 15 अगस्त पे इसको गाते हैं, लिखने वाले ने पार्टीशन कराया, इसको हमको क्यों गाना चाहिए? इसको नेगेटिव लिस्ट में क्यों नहीं डालना चाहिए? वाई? सोचने की जरूरत है. कोई जरूरत नहीं है इसको गाने की, क्या जरूरत है? और बहुत हमारे राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, आज नए नए हैं, बहुत अच्छा लिख देंगे, इससे अच्छा भी लिख देंगे. सोचने की बात है. So I would like to congratulate Ram Madhavji for this book, to understand the time and timings of partition. But what now? Past is past. It has happened. What happened, happened. What happened, happened. What are the lessons for us? Government of India, that's why Government of India has decided and declared August 14 as Partition Horror Remembrance Day. कुछ लोग सोचते होंगे कि क्यों कर रहे हैं, घावों को उघाड़ने की क्या जरूरत है, अननेसेसरी क्या जरूरत है इसको डिस्कस करने? इसको जरूरत है because we don't want to repeat those mistakes now. We don't want to repeat those mistakes now.
We have to make India powerful, prosperous and progressive nation. पर हमें अपनी जनरेशंस को ये बताते रहना है कि ये कैसे हुआ. इसलिए नहीं बताना कि हम कोई और कुछ चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो. अब अगर कोई जिना ये कॉल करे, पूरा देश खड़ा हो जाए इसके खिलाफ. शायद ये राम माधव जी का इसका लिखने का है कि पूरा देश खड़ा हो जाए कि ये ऐसा नहीं हो सकता. नाउ यू कांट डू इट. समथिंग विच हैड हैपेंड इन 1947, now it is not possible in India. This new India will not tolerate such nonsense and nuisance. For this we have to अपने बच्चों को बताना है, उनके बच्चों को बताना है कि कैसे हुआ था उस समय और आगे ना हो. ये बहुत बहुत जरूरी है कि ये दुर्घटना आगे ना हो जाए. किताब इसकी चिंता करती है. That's why, my dear friends, always remember, partition was not merely a loss of territory, but vivisection of our motherland. We should always remember this. पाकिस्तान का बनना हमारे साथ ही नहीं बुरा हुआ, संसार के साथ भी बुरा हुआ. ये न बनता तो आज टेररिज्म इतना नहीं होता. ये न बनता तो आज इतने निर्दोष लोगों की जो दूसरी दुर्घटनाओं में जान जाती है वो न जाती. ऐसा बहुत कुछ न होता ये न बनता तो. पर चलिए बन गया. अब आफ्टर 75 years of Indian independence, it's our duty and responsibility to create that environment where no jinnah can have courage to say such things, because he should be scared and worried that if I say something against India, the whole India will stand up. So this is why we should discuss, debate in our university environment, not only political scientists, but we all are sons and daughters of this great nation. It is our responsibility to protect the interest of our country. If we will not do it, who will do it? That's why this book is very, very important, must read for all of you. Please read this book, understand the concepts which have been explained in a very different language, a very interesting way. Again, I would like to thank Ram Madaji for such a wonderful book. Thank you very much. Thank you, sir. As you rightly said, a Radcliffe line changed it all. तमाम खाना बदोशों में जिनके घर छूट जाते हैं, तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, सब अपने अपने घरों को पलट कर देखते हैं. बैलगाड़ियों पर बैठे हुए अपने घरों से दूर जाते उतरे चेहरे वाले लोग यही सोचते रह गए कि मंदिर और मस्जिद से टेक लगाई हुई गंगा यमुनी तहजीब ये आखिर संतों, सूफियों, साधुओं, कलंदरों और दरवेशों वाले हिंदुस्तान को किसकी नज़र लग गई. On this note, I will not stand between me and Ram Madhav ji. I cordially invite you, sir, to address the audience. Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh ji, Professor S.P. Singh ji, Professor Vikas ji, Professor Sanjeev ji, all the eminent academics present in the audience and dear friends. घरों में बड़े लोग बच्चों को कंधे पर उठाते हैं, फिर बोलते हैं कि देखो हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है. ऐसा मुझे थोड़ा उठाने का प्रयास एसपी सिंह साहब ने और योगेश जी ने किया है. I am just a student. I have a bad habit of reading and a worse habit of writing. So मैं पढ़ता हूँ, लिखते रहता हूँ. उसी श्रृंखला में एक किताब मैंने लिखा था जिसके बारे में आज यहाँ चर्चा हो रही है. I would like to express my sincere gratitude to Honorable Vice Chancellor, Professor S.P. Singh and all others for, for giving me this opportunity to present my case before you, the academics, the learned, knowledgeable academics here.
about what I felt about this whole saga of India's partition. I must congratulate Professor S.P. Singh, also Professor Vice Chancellor, for taking up this very important task of setting up a center about partition studies. And it gives me a lot of happiness that my book happens to be one of the first subjects being discussed here. As an author, it always gives, authors will be delighted to talk about their works in detail. But publishers will be very unhappy. If I tell you everything about what I have written, then you won't read my book. Already a lot of injustice has been done by Yogesh ji. He has, leaked and disclosed so much about my book. So I'm not going to go too much into the details of it. But friends, this book is about essentially two partitions. One partition, as Professor Yogesh Singh mentioned earlier, the partition that took place in 1905, partition of Bengal, one province. Bengal was India's largest province at that time. That time's Bengal included entire Assam, entire Bihar, and today's Jharkhand also. And of course, both Bangladesh of today and Bengal of today. This whole region used to be one province at that time called Bengal province. It was the largest province with 80 million population, 8 crore population. It was divided in 1905. As a test case, the British felt that one way of weakening India's independence movement was to create a cleavage between Hindus and Muslims. We must divide the Indian society first so that the independence movement can be weakened. Bengal was the epicenter of the independence movement because Calcutta was the capital of the British Raj. So the first attempt at partitioning Indian society was done by the British in 1905 by way of partitioning of Bengal. As mentioned, 6 years later, King George V, the then king of the British Empire, was forced to rush to India to declare its annulment. उस विभाजन को रद्द करना पड़ा ब्रिटिश को 6 साल बाद. उसके पीछे एक आंदोलन चला था जिसको इतिहास में पढ़ाते हैं वंदे मातरम आंदोलन, led by 3 great leaders, Lala Lajpat Rai from North India, basically from Punjab, Bal Gangadhar Tilak from South India, from Maharashtra, Pune, and Bipin Chandra Pal from Eastern India, from Calcutta. Lal, Bal, Pal, this trio led that movement, but it was an all India movement. In fact, the British records, Lord Curzon was the viceroy when Bengal was partitioned. Curzon writes to the British authorities in London that at the most, the Bengalis will protest. The whole idea was that, okay, if we partition Bengal, Bengali log thoda halla karenge, baki to kuch nahi hoga. But we can actually create a big division between Hindus and Muslims. But it's not just Bengalis, the whole country stood up, forcing the British to, as I said, annul that partition. Fast forward by 35 years, the whole country was being divided. Why could we not stand up to stop it? My book is about these two partitions. What happened in between these two partitions or during that fateful 3.5 decades. My whole effort was to draw some lessons from it. Friends, this book is about 2 leaders. When I say 2 leaders, I'm not saying those 2 leaders are equal. For the sake of comparison, we compare leaders. Like we compare Modi ji with some other leader. That doesn't mean they're equal. They're not equal. But for the sake of understanding, we compare. So, similarly, my book is about 2 leaders. Both incidentally were Gujaratis.
In fact, both came from the same region in Gujarat called Kathiawad. Both were lawyers. Both had an important role in the freedom movement. Both worked in the Congress party. One continued in Congress, one left Congress in the middle. And they were Jinnah and Gandhi. My book is about the trajectory of these two leaders. There were many players in India's independence movement and the consequent partition of India. But these two leaders, the trajectories that the two leaders took were critical to all the developments during that period of 35 years that I talked about. So my book is about these two leaders. Very interestingly, the starting point of these two leaders was very different. Jinnah started off as a staunch nationalist. He joined Indian National Congress also in 1904. He attended the first Congress session in 1906. Remember, 1906 was the year when Muslim League was created. Jinnah was not in Muslim League at that time. In fact, Jinnah was there in Congress. Jinnah was acting as secretary to Congress leaders of those times. Dadabhai Nauroji ke secretary the. He was a staunch disciple of Gopalakrishna Gokhale, another stalwart of India's freedom movement. In fact, in 1912, Jinnah claims that I will be the Muslim Gokhale. This was his own statement. And in 1906, when this news came that Muslim League नाम का एक संस्था की स्थापना हुई है, which is here to protect the interests of the Muslims of India, Jinnah was the first to protest. Jinnah asked this question publicly, that who gave you the authority to represent all Muslims? I am a Muslim, I am not with you, I am with Congress. That was Jinnah's starting point. When Muslim League started collecting some Muslims here and there, Jinnah made full efforts to bring Muslim League into the fold of Congress. And Jinnah's efforts succeeded in 1916, finally, when Muslim League agreed to attend the Congress annual session at Lucknow. A joint session of League and Congress was held in Lucknow. In 1916, the efforts were that of Jinnah. In fact, Lokmanya Tilak was so thrilled by that coming together of Muslim League and Congress that Tilak declares, luck now at Lucknow. You know, if you split the word Lucknow, one word is luck, the other word is now. हमारे लिए आज भाग्य खुल गया है, क्यों? लीग आ गया है. मुस्लिम लीग हमारे साथ आ गया. This was Lokmanya Tilak that time. But the man behind it was Jinnah. But in 1920, Jinnah decided to leave Congress, set off on a different course. Not exactly the hardline Muslim course initially. He waited for another 15 years. By 1935, he decided that no other politics is working, so I should now embark on a rabid Islamist politics. So he started wearing sherwani for the first time in 1937. Until then, he always wore Western dress. He never spoke in any Indian language. He always spoke in English. In fact, he and Gandhi very briefly met once in London when both were doing their barrister degree there in 1904 or 1905. But their main meeting happened after Gandhi returned to India in 1915 from South Africa. The first meeting happens in Mumbai when there was a felicitation program for Gandhi organized by the local Gujarati Samaj. They decided to call Jinnah as the chair. Because Jinnah being a fellow Gujarati, they felt that Jinnah should come to chair the session. Gandhi was again very happy because seeing a Muslim chairing his session, Gandhi was very impressed. Gandhi openly conveyed it that I am so happy that a fellow Gujarati Muslim is chairing my session. But what happened in that session was, when Jinnah rose to speak from as president, he started off in English.
Gandhi taunted him. यार गुजराती हो, अंग्रेजी में क्यों बोलते हो? गुजराती में बोलो या हिंदी में बोलो. अगर गुजराती नहीं बोलना, हिंदी में बोलो. Jinnah didn't react. Jinnah continued his speech in English, but that was the first meeting that had created a wedge between the two. And that wedge, that gulf, kept growing. After 3 years, Jinnah decided that I cannot work with Gandhi. I will have my own way. He wrote a nasty letter to Gandhi that under you, we are going to have great problems. You don't understand Muslims, etc., etc. He wrote. He left Congress in 1920. But his reason he gave was Khilafat was wrong. So I'm not going to work with you. I will leave this movement. Joined Muslim League, did not succeed. As Yogesh ji said, in 1937 also it was total failure. He could not enter Punjab, because Punjab was in the hands of his arch rivals. He could not enter Sindh, because Sindh was in the hands of anti-league leaders. He could not enter Bengal. Bengal was in the hands of Krishak Praja Party, which was very opposed to Jinnah. Nobody, no takers were there. Then Jinnah decided, now I should now resort to a rabid communal propaganda. Then only I can collect Muslims behind me. That was Jinnah's trajectory, which finally ended up in India's partition. Come to Gandhi. Gandhi's trajectory was a little opposite. Gandhi started his journey in India in 1915 with the belief that without Muslims coming together, we can't have independence. That was his starting point. So we have to do anything and everything to keep Muslims with us, otherwise no freedom. He used to say that in South Africa, Muslims and Hindus both were behind me. When I fought against the colonial masters, I had the support of both Muslims and Hindus, which was true, which was a fact. But the problem is, there both were immigrants. Here it was the people. So, but Gandhi firmly believed that without Hindu-Muslim unity, no freedom. But in the process, what happened was, Gandhi started making compromise after compromise in order to keep Muslim League on Congress side. It's a long history. I discussed it in my book. I'm not going to spend too much time on that. But all these compromises finally led only to people like Jinnah exiting, thinking that, Gandhi is patronizing wrong people. For example, Gandhi, in his eagerness to patronize Muslim leadership, went to, mobilize people like Maulana Muhammad Ali and Shaukat Ali, the Ali brothers. In fact, Muhammad Ali became the president of the annual session of Congress in 1923 at Kakinada, where he objected from the dais about singing of Vande Mataram, which kept Bengal united. Because of that one song, the whole country stood up to keep Bengal united. Was objected to by Muhammad Ali in 1923. That objection was upheld by Congress in 1937 by truncating Vande Mataram, only keeping one main stanza of it. Rest of it was removed. 1937, Vande Mataram was partitioned. 1947, India was partitioned. I'm just giving you one example of the compromise. A compromise as galore happened, with the only hope that if we compromise with them, they will be with us. But by 1940, Gandhi realizes that this compromise is not working. This pandering to the separatist sentiments of Muslim League. Please remember, I am using the word Muslim League, not Muslims per se, was not working. So in 1942, while announcing Quit India movement, Gandhi says, see, I have now, until now, worked on the premise that Hindu-Muslim unity first, then freedom. Today I am declaring Hindu-Muslim unity can wait, freedom cannot. He changed his trajectory in 1942 when he realized that this appeasement of Muslim League had actually ended up in strengthening the separatist elements. In fact, in 1943, one prominent Muslim leader in Congress writes a letter to Gandhi. He accuses Gandhi of Gujarati partiality. He says, Mr. Gandhi, we are fed up with you. You always are partial towards Jinnah because he is also a Gujarati.
We Muslims who are in Congress are never taken into confidence by you. You never asked us whether we support Jinnah's separatist demands or not. We are always ignored. We are always, kept on the sidelines. Jinnah was given so much prominence, so you are Gujarati partial. Gandhi realized that this pandering to the sentiments of or demands of Muslim League had actually led to strengthening Muslim League. 1940 League demanded partition and nothing short of partition. Then Gandhi insisted that no question, no partition, let Hindu-Muslim unity remain where it is. Let us continue to fight, but India should remain one, should not be partitioned. Last 5 years were completely, Gandhi's effort was to keep India united. In that he went to the extent of offering the leadership of India to Jinnah. In fact, when it was decided, June 3rd plan was announced that India should be partitioned, he goes to Mountbatten and tells Mountbatten, sir, please call Jinnah and tell him that he can take over the whole country. Let him not partition India. Why just partition Pakistan he should take? Let him take whole country. Mountbatten was taken aback, naturally. Mountbatten says, okay, I won't ask you how Nehru and Patel will react. That question I am not going to ask you. But let me ask you how Jinnah will react. Gandhi says, yeah, I know. Jinnah will say, this is wily Gandhi. ये गांधी बदमाश है. वो आज कहेगा कि तुम पूरा देश ले लो, ब्रिटिश को पहले भगाएगा, बाद में मुझे भी भगाएगा. I don't trust Gandhi, मुझे मेरा पाकिस्तान दे दो. What I am saying is, Gandhi's trajectory was this. Started off as a person of utmost compromises. In the process, mistake after mistake was committed by Congress leadership. But at one point, the realization dawned that no, these compromises are not helping. We should stand up for India's unity. But by then it was too late. It was too late by then. Friends, this is about 2 lessons, my book is. Lesson 1, never pander to the separatist forces. Never try to please them. Never try to compromise with them. Lesson number 1. Lesson number 2, as Vice Chancellor Saab repeatedly emphasized on that, no sacrifice is big in keeping country united. You should be ready for ultimate sacrifice to keep the country united. That's the second lesson. Why I am saying this is, when in 1940, Jinnah formally, Muslim League formally passed a resolution demanding Pakistan, partition of India. Gandhi was asked this question about what he has to say, what he had to say about Jinnah's demand. Gandhi's reaction was, vivisect me before vivisecting this nation. मुझे पहले टुकड़े टुकड़े करो. मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद ही भारत को टुकड़ा किया जाएगा. This was Gandhi in 1940. When June 3rd plan was signed in 1947, Gandhi was reminded of his statement. सर तो 6 साल पहले तो आपने कहा, आपके शरीर के खंड विखंड होने के बाद ही देश बटेगा, आपके आंखों के सामने देश बट रहा है. तो गांधी जी gave a very important reply. In fact, that's one area of study for the center. He says, yes, when I said that, I only reflected the sentiment of my nation, people of my country. Nobody was ready for partition at that time, so I reflected that sentiment. But today, when the Muslim League demanding partition was indulging in violence and arson, killings, rapes on the streets of Calcutta, streets of Delhi, streets of Lahore, my people are not ready to fight back. हम तैयार नहीं है लड़ने के लिए. इसलिए मैंने कहा आज we are not ready to fight back. In fact, many years later, in an interview, Nehru confesses, you see, we became old and we were tired of the antics of Jinnah. These were Nehru's words. हम थक गए हैं ये जिन्ना के नाटक से.
हमने सोचा इससे छुटकारा पाना है. When the time came to stand up to these forces, we thought we were tired. We could not stand up. The second important lesson is you cannot have freedom without making the necessary sacrifices for it. Then आपको वैल्यू ही पता नहीं चलेगा. तो these are the two important lessons. I will make two footnotes. One footnote is, I mean, I'm only talking about what is there in this book. One footnote is, in 1947, Jinnah's discourse, I mean, in the last few years, Jinnah's discourse was that, as mentioned earlier also, that Hindus and Muslims are two separate people, they cannot live together. We rejected it. When I say we, Gandhi rejected it. Even Nehru rejected it. In 1949, Nehru goes to Aligarh Muslim University after partition was over, and some people remained in India, some people went away to Pakistan among the Muslims, many remained in India. You must read that speech of Nehru to the students of Aligarh Muslim University. In that he says, you see, I feel emotionally connected to the great past of my country, its great history, its great leaders, its great civilization and culture. Do you also feel the same way? This was the question Nehru puts to those students. Meaning, we don't think that we are two separate people. By history, by culture, by civilization, by forefathers, by ancestry, we are one people. We had that as the basis for rejecting partition in 1947. 75 years later, are we honestly today feeling the same way? Or today, more and more of us feel that no, we can't live together. If that is the reality today, in 75th year of independence, if the discourse is Hindus and Muslims cannot live together, if that is the discourse that influences our thinking, our mind, our writing, our speaking, then Jinnah must be laughing in his grave. This is what I said 75 years ago. Beware of that discourse. One footnote. And the second footnote is, what happened in 1947 was not just the partition of the lands, but it was the partition of hearts. दिल टूटे थे. तो ये बात भी ध्यान में रखना कि पार्टीशन को हमने विरोध करना मतलब केवल भूमि एक करना मात्र नहीं है, दिलों को भी जोड़ना होगा. So from all this, I only deduce two mission statements. First mission statement was already made by our Vice Chancellor, that from all this, we must learn lessons so that this country shall not be partitioned again. और एक विभाजन नहीं होगा. ठीक है, आज के माहौल में तो पक्का है कि और एक विभाजन नहीं होगा. होगा नहीं. तो पहला मिशन स्टेटमेंट वो होना चाहिए. और दूसरा, जो अटल जी कहते थे, जो खोया था वो वापस लाए. पर जब जो खोया था जो वापस लाए, जब मैं कहता हूं, अगेन मैं कह रहा हूं, ये केवल टेरिटरी की बात नहीं है. वैसे तो हिंदुस्तान, इंडिया, was never one political entity before 1947. In fact, when we became independent in 1947 also, there were 560 different princely states in this country. And don't think that they were all vassals of the British. No, not all of them were. Many of them had their own constitutions.
In fact, in 1946, between 1946 and 1950, 1947 and 1950, for 3 years, when India was only a dominion, not a full republic, the biggest effort of Sardar Patel, Mountbatten and VP Menon was to make sure that every princely state, first of all, holds a meeting and cancels its constitution first. Because जब तक वो constitution है, उनका अलग entity है, उसको पहले रद्द करना पड़ेगा ना. तो ट्रैवनकोर का कॉन्स्टिट्यूशन रद्द किया गया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन रद्द किया गया, तीसरा रद्द किया, सब किया गया. एक बंदे ने रद्द नहीं किया. वो कौन है आप जानते हैं? कश्मीर है, पकड़ के रखा है. वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम रद्द नहीं करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे अलग. बाकी लोगों ने मान लिया. सो इट वाज नॉट अबाउट पॉलिटिकल यूनिटी per se in before 1947. Politically, maybe we were different kingdoms and different rajas, maharajas and all that, and British India was there, many others were there. But there was one emotional unity. So when we talk about Akhand Bharat, it's not necessarily about sending army into Pakistan and taking back the territory. It's not about that. It's about creating that emotional oneness. So let me end by submitting that जो खोया है वो वापस लेना है, मतलब वो जितना टेरिटरी का है उतना दिलों का भी है. तो since I worked in Kashmir for many years, I will end with an appeal to all of you. कश्मीर का वो जो संवैधानिक दरार थी, दो डिवीजन था, उसको तो हमने एंड कर दिया. आर्टिकल 370 हैज बीन annulled now. It's not no longer it is there, but इसमें कंटेंट नहीं है. आर्टिकल 370 है, उसमें कोई कंटेंट नहीं है, नंबर है. तो क्या उससे हो गया क्या काम पूरा? नहीं. सरकार उतना ही कर सकती थी. जो संवैधानिक विभाजन हो रहा था उसको खत्म कर सकती थी. दिलों का विभाजन को खत्म करने का काम अपना है. तो इसलिए मैं हमेशा सब जगह कहता हूं कि नेक्स्ट हॉलीडे आपको मनाना है तो श्रीनगर में मनाइए. नेक्स्ट पिलग्रिमेज पे जाना है तो अमरनाथ यात्रा पर जाइए, वैष्णो देवी यात्रा पर जाइए. नेक्स्ट हनीमून मनाना है तो गुलमर्ग जाइए. तो भाई साहब इसलिए हंस रहे कि ये प्रचारक इनको मालूम नहीं है नेक्स्ट हनीमून क्या होता है. हनीमून तो एक ही होता है, मुझे पता नहीं है. एक ही होना ऐसा रूल है क्या, मुझे पता नहीं है. एक ही दंपति का होना है, कितने भी बार करो. बट हमें जाना चाहिए. जाके वहां के लोगों को यह एहसास कराना पड़ेगा कि वी आर ऑल वन पीपल, 1.4 बिलियन इंडियंस, वी आर वन फैमिली. ये सेंस, ये सेंटिमेंट वहां निर्माण करना पड़ेगा. दैट इज द ट्रू अखंड भारत. So we need to work towards ending this division of hearts also, together with aspiring to end the territorial divisions and partitions. Friends, as I said in the beginning, book में काफी कुछ है, but सब बता दूं तो उसका सेल इफेक्ट हो जाएगा. तो मैंने उसका जो मुख्य दो बातें हैं मैं आपके सामने रखा हूं. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर SP सिंह साहब फॉर गिविंग मी दिस एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी. एज द प्रोग्राम सजेस्ट आई विल बी एट योर मेर्सी फॉर सम टाइम. आपका ऑब्जर्वेशंस और क्वेश्चंस मैं थोड़ी देर ले सकता हूं. थैंक यू. नमस्कार. Thank you so much, Ram Madhav ji. You made us speechless. दिलों को जोड़ने के लिए होली की गुजियाओं में सेवियों की मिठास और लज्जत को ढूंढना शुरू कर दीजिए. Your such intriguing engagement with this subject, sir, has definitely been an eye-opener for many of us, while for others it may have brought back those moments and memories of pain. Because we all know that partition was one of the biggest human tragedies, which was accompanied by so much savagery, genocide, displacement that has no parallels in human history. And as you said, आपके मिशन स्टेटमेंट को ही दोहरा रही हूँ आपकी ही किताब से, I quote,
History cannot be reversed, however, it can be prevented from repeating. Partition of India is not just history, not a sob story. It has lessons for posterity. It is not just about the hypothesis as to whether it could have been prevented. It is about whether another partition can knock at India's doors and how such a calamity can be prevented. Unquote. With your permission, sir, I now would like to open the House for a question-answer session. जी 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 मैं साथ में ये घोषणा करना चाहूँगी कि राम माधव जी की पुस्तक बाहर सेल के लिए है. जो भी व्यक्ति चाहें प्लीज़ आप खरीद सकते हैं. बाहर उसका डेस्क लगा है और उसका मूल्य बाज़ार से थोड़ा सा कम है. बहुत कम है. जी सर, पब्लिश करने का ही है बस. जी मैं जी 2 वॉलंटियर्स से अनुरोध करूंगी कि वो रोमिंग माइक को लेके चलें. जो भी अपना प्रश्न उठाएं अपने आप को परिचित करें पहले. धन्यवाद. 1947 में कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं. कच्छ से लेकर के और राजस्थान के मुनाबाव बॉर्डर तक इतना लंबा सिंध की टेरिटरी है. एक भी गांव इस भारत के इस टुकड़े में नहीं आ पाया. एक ये प्रश्न है. और दूसरा आपका दिलों को जोड़ने वाला, अगर कश्मीर की बात करते हैं तो क्या दिलों को जोड़ने के लिए हिंगलाज देवी को कभी सोच सकते हैं क्या? क्यों नहीं सोच सकते हैं. बिल्कुल. एक बात तो सही है, जैसा कहा गया है, रैटक्लिफ को बहुत कम समय दिया गया था ये पार्टीशन की रेखा खींचने के लिए, और बहुत एडहॉक बेसिस पर सारे चीज़ों का तय हुआ था. बहुत एडहॉक बेसिस पर तब के तब डिसीजन लिया जाता था. कुछ जगह हमने भी उसका एडवांटेज लिया है. जहां हम प्रिवेल कर सकते थे वहां प्रिवेल कर गए. वहां उदाहरण के लिए पंजाब में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, होशियारपुर एरियाज. गुरदासपुर वॉज द क्रिटिकल लिंक बिटवीन रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड कश्मीर. उस समय गुरदासपुर में अंबाला ये सब आते थे. बट गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का उस समय नॉमिनल पॉपुलेशन में 52% मुस्लिम था. तो टेक्निकली जिन्ना कहता था कि ये पाकिस्तान में आना चाहिए. पंजाब का जो 2 भाग होना था उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी वाज टू गो टू वेस्ट पंजाब एंड हिंदू मेजॉरिटी टू रिमेन इन ईस्ट पंजाब इन इंडिया. But somehow Nehru and Patel prevailed because they knew that if Gurdaspur went to Pakistan, Kashmir is gone. तो उन्होंने प्रिवेल किया. somehow कुछ करके गुरदासपुर को 2 टुकड़े कराए. एक आधा हिस्सा भारत में आया. हुआ है. But you are right. I mean many such tragedies happened. कुछ शहरों का प्लेबिसेट हुआ. जहां मुस्लिम मेजॉरिटी होता था उन शहरों में प्लेबिसेट हुआ, वो पाकिस्तान में गए. जहां हिंदू मेजॉरिटी थी वहां प्लेबिसेट नहीं हुई, चुप रहे. इन ए वेरी haphazard manner, in a very hurriedly manner, that whole division was affected, causing lot of serious difficulties to people. I mean, वो स्टोरी अपने आप में बहुत ही ट्रैजिक है. बट let me confess before you, my book does not deal with that topic. The horrors of partition was not the topic of my book. My book was about certain lessons that we need to learn from all this. But you are right. Certain things happened in a very unfortunate way. About Hinglaj, not just Hinglaj, Sharda Peeth, जो ऑक्युपाइड कश्मीर में आज है, कुपवाड़ा से ज़्यादा दूर नहीं, मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर है. बट ये जो LOC है, LOC के उस तरफ है. जैसा करतारपुर साहिब का एक्सेस हुआ है, ऐसा हिंगलाज के लिए, शारदा माता के लिए भी एक्सेस होना चाहिए. बट प्रॉब्लम आता यह है ना कि आज दोनों देशों के बीच जिस प्रकार की संबंधों की स्थिति है, वो जब तक बदलेगा नहीं, जब तक पाकिस्तान में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आता नहीं है, तब तक इन प्रश्नों का तुरंत समाधान मिलना मुश्किल है, उत्तर मिलना मुश्किल है. होपफुली पाकिस्तान में कुछ अच्छा चेंज आएगा. थैंक यू.
डॉक्टर अभिषेक और पार्टीशन की वेदना के लिए बना है उसके लिए, लेकिन जब यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी भारत का विभाजन करा सकती है, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखंड भारत के लिए क्या कोई केंद्र नहीं बन सकता? क्या मुल्तान प्रकोष्ठ, लाहौर प्रकोष्ठ, ढाका प्रकोष्ठ करके ऐसा केंद्र का निर्माण नहीं किया जा सकता ताकि हम 2047 में अखंड भारत का निर्माण कर सकें? या दिल्ली विश्वविद्यालय अखंड भारत के निर्माण का केंद्र क्यों नहीं बन सकता? आपका सुझाव है वीसी साहब के लिए। थैंक यू। आगे भी हाँ। माइक ऑन कर लीजिए। नमस्कार, मैं सुधीर सिंह हिंदी पढ़ाता हूँ जेएनयू में। विभाजन पे साहित्य हमने पढ़े और आपका जो एक संदेश है वो बहुत रिमार्केबल है कि रेखा नहीं मिटाई जा सकती, संविधान में केवल अधिकार दिया जा सकता, दिलों को जोड़ने की बात। अभी 3 दिन पहले 8 दिन कश्मीर रह के आया हूँ, जम्मू से कश्मीर तक, और वहाँ पे इसी तरह से बहुत सारी बातचीत करते हुए मैं बाद में ऊपर तक गया, वहाँ तक जहाँ तक हमारी पहुँच थी। इस सोच को बदलने के लिए किस तरह के साहित्य को या किस तरह के विश्वविद्यालय को हम जिम्मेदार ठहराएंगे? आपने अभी हवाला दिया कविता के, इस तरह पढ़ रहे हैं, शायद इसमें हमारे मित्र होंगे जो उन्हीं का इकबाल का लिखा हुआ शिकवा या जवाब शिकवा पढ़ा होगा। और जिस कविता का आप कोट कर रहे थे उसमें ये भी लिखा था, जिसको वो दौरे जहाँ साहब दुनिया भर के तमाम इतिहास मिट गए हैं, किसका इतिहास नहीं मिटा उसकी व्याख्या भी नहीं की जा चुकी है। लिटरेचर को भी दूसरे तरह से पढ़ाया गया जिस तरह से इतिहास की व्याख्या की गई है। सवाल इससे जुड़ता है कि ये जिम्मेदारी केवल कह देने से लोगों को जोड़ने की बात है, जहाँ पे अभी मैं तुरंत का उदाहरण दे रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा बिल्डर है श्रीनगर में, उसने बनाया है बहुत सारी बिल्डिंग, उससे मेरी बात हो रही थी, वो 3rd शादी किया। उसका सबसे बड़ा मोटो ये था कि यदि मैं एक, उसके जो इन-लॉज से मेरी बातें दुबई में शिफ्ट हो गया है, भारत सरकार उसको खोज भी रही है, कि यदि मैं एक शादी ऐसी करता हूँ जो हिंदू से जुड़ी हुई होगी तो मैं 1000 जो है पुण्य करने के बराबर काम करूँगा। इस सोच को बदलने के लिए, दिलों को जोड़ने की बात पहले तो दिमाग की बात है ना, दिल तो तब जुड़ेंगे जब मानसिकता बदले। इस मानसिकता को बदलने के लिए क्या हम जैसे तमाम विद्वज्जन का ये कोई योगदान बनता है कि कुछ लिटरेचर उपलब्ध करा सके जिससे काम ठीक है। तो जहां तक दिल जोड़ने की बात मैंने की थी, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सारी जिम्मेदारी हिंदू पर है, मेरा कतई वो उद्देश्य नहीं था। यह देश के सबको सोचना होगा, इस देश के मुसलमान को भी सोचना पड़ेगा, इस देश के हिंदू जो सोचता है कि हम अलग है उनको भी सोचना होगा कि हम क्या मिलकर कैसे रह सकते हैं। तो क्योंकि विभाजन का बीज वो था ना कि हम अलग है, सेपरेट है, और ये आप 70 साल सिखाते रहे ना, ये ऐसा नहीं है कि केवल 47 में हो गया है, बाद में भी हम वही परसू करते रहे, अलग है अलग है अलग है। और संविधान में the very fact that Article 370 survived for 75 years or 70 years, not 75 years, was a testimony to the fact that we had, implicitly admitted that we were separate. There needed a courage by some leader like Prime Minister Modi to say that no, I won't admit. I had to end it. We are one nation. वो करेज दिखाना पड़ा, बट 70 साल तो आपने सिखाया ना, उसको दूर करने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। वो हट गया तो कल से सब लोग हमारे जैसे हम सोच रहे ऐसे सोचें, शायद नहीं, पर मैं ये कह सकता हूं विथ एक्सपीरियंस काफी कुछ परिवर्तन आज कश्मीर में है। पहले सबसे बड़ी बात तो पिछले 3 साल से आपको याद है ना, सेम गुलाम नबी आजाद साहब पार्लियामेंट में भाषण क्या था, ब्लड बात हो जाएगा कश्मीर में, यह उनकी बात थी। कहाँ ब्लड बात हुआ? और 3 साल का अनुभव यह कहता है कि ऑर्डिनरी कश्मीरी आज वायलेंस नहीं चाहता है, हिंसा नहीं चाहता है, आतंक नहीं चाहता है, और आज सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ इन कश्मीर। क्रेडिट गोस टू पीपल ऑफ कश्मीर आल्सो, रिमेंबर। वो आगे आकर कह रहे हैं कि ये आतंकवादी वहां छिपा है, यहां छिपा है, इसको जिसको ह्यूमेंट कहते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस,
बहुत क्रिटिकल होता है काउंटर ऑपरेशंस में। आज वहां का समाज नहीं चाहता कि और एक बार टेररिज्म बढ़े और एक बार कुछ हिंसा बढ़े। हाँ, आज उनका गोल पोस्ट थोड़ा बदला, आज डिमांड है स्टेटहुड हो। अच्छी बात है, स्टेटहुड कोई भी मांग सकता है। मैं लद्दाख में था, लद्दाख वाले कह रहे कि हमको तो अलग स्टेट चाहिए, मांग सकता है ना, संविधान के अंतर्गत कोई डिमांड हो सकता है। यह परिवर्तन आएगा हमारा प्रयास भी जारी रहने पर। और आज जब इस देश के 140 करोड़ लोग या 130 करोड़ लोग संकल्प करते हैं कि हम देश को टूटने नहीं देंगे, तो सबको प्यार से या दृढ़ता से साथ रखना पड़ेगा। वो एफर्ट भी हमको करना पड़ेगा। मैं वो कह रहा था, हमको देखिए, गांधी को लेकर कई संभ्रम है, कुछ उसमें सच्चाई भी है, कुछ गलती। वैसे तो मैंने किताब में चर्चा की थी, कौन सा वो लीडर है जो गलती नहीं की थी उस समय? सबके अपने अपने गलतियां थी, बट सबसे मुख्य होता है उनकी गलती थोड़ा ज्यादा दिखती है, स्वाभाविक है। पर यू सी द लास्ट फेजेस ऑफ गांधी, ही यूज्ड टू गो टू हिंदू विलेजेस एंड इंसिस्ट दैट नहीं, खड़े रहो, लड़ो, मरना है तो मरो, बट जाओ मत, छोड़ो मत। क्या? क्योंकि ये आपको आग्रह से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, उस समय लड़ने से मरना ही होता था उस समय, पर आज लड़ने से मरोगे नहीं, क्योंकि आज समाज संगठित खड़ा है। तो आज हम ताकतवर है, इस ताकत के साथ एकता को प्रस्थापित करना है, यह सोचना चाहिए। एक सोच हो सकता है। दूसरा सोच ये भी हो सकता है ना कि आज हमारे पास ताकत है ना, ये जो बचे कुछ है इनको भी भगा देंगे, ये भी एक सोच हो सकता है। मैं कहता हूं कि वो जो दूसरा सोच अगर होता है तो सबसे खुश होगा जिन्ना। पर अगर पहले सोच पर चलेंगे तो फिर पार्टीशन से हमने लेसन सीखा है, ऐसा उसको मानना पड़ेगा। सोचने का विषय है, हमारा एफर्ट और जारी रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, कश्मीर में भी और जगह भी, सब जगह ये सावधानी आवश्यक है। Hello sir, you mentioned that Jinnah didn't have mass following, still his voice of partition was listened to and agreed by Britishers. So is it that this is basically Britishers who wanted partition and they achieved Jinnah by promoting him? Sir, different interpretations were given to it. Like, it was a British conspiracy to promote Jinnah. But I have mentioned it in my book also, that when, there was this reference, in 1937, when elections were held to provincial assemblies, Muslims were having their own consciences, where only Muslim parties and Muslim candidates were to contest. In the Muslim constituencies, Congress won more seats than Muslim League. Only around 5% Muslim votes went to Muslim League. Down and out Muslim League. 1938 में नेहरू started dialogue with Jinnah. भाई क्यों करना था? When Muslim society ही जिस नेता को रिजेक्ट की थी, उनसे बातचीत करने की जरूरत क्या थी? Instead, that's why I mentioned to you, there were Muslim leaders who were ready to sail, who were sailing with Congress. In fact, I tell you something which would be really heart-wrenching. I mean, when I read that speech, tears come rolling down my eyes. Khan Abdul Ghaffar Khan, Frontier Gandhi, always stood with the Congress leadership. Never allowed Muslim League or Jinnah to enter his province. Those days इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे, नेफा बोलते थे, NWFP बोलते थे, टुडे खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, जहां से इमरान खान आता है। खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग का प्रवेश ही वर्जित था। क्यों? क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे, सरहद गांधी बोलते थे, सीमा गांधी, वो खड़ा था। बिना फ्रंटियर गांधी से पूछे NWFP को पाकिस्तान को दे दिया गया। NWF में उस समय फ्रंटियर गांधी की सरकार थी, बट ही वॉज नॉट कंसल्टेड। ही कम्स जुलाई 15 को दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होता है।
जुलाई 3 प्लान जो जिस पर कांग्रेस के नेहरू और पटेल कृपलानी नेहरू 3 of them were present, नेहरू signed on that partition plan. तो कांग्रेस में बड़ा गुस्सा था. एक्चुअली कांग्रेस रिवोल्टेड एग्निस्ट signing of June 3 plan. So when 15th July meeting was held in Delhi, Khan Abdul Ghaffar Khan also came. Khan Abdul Ghaffar Khan माइक पे जाके फूट फूट कर रोने लगते हैं, ये कहते हुए कि which Muslim will ever trust you again? We trusted you. We put all our might behind you. You means Congress. We wanted to be a part of India. You today threw us to jackals. These were his words. वो इतना रोने लगता है कि गांधी को अपने सीट से उठकर जाकर उनको दोनों कंधों से उनको हाथ में आलिंगन करके ले जाके बिठाना पड़ता है. फिर गांधी अपना भाषण देते कहते कि देखो भाई, मुझे मालूम है सेंटिमेंट यहां कांग्रेस में, हम कोई नहीं चाहते थे देश का इस प्रकार विभाजन हो, पर हमारे नेताओं ने सोच विचार कर अनेक एंगल सोचकर ये निर्णय लिया है, अब हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये कहता है गांधी. गांधी कहने के बाद कांग्रेस में शांति आती है, फिर सब चुप हो जाते हैं. गांधी जब डैश से उतरने लगते हैं तो वन ऑफ द एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ गांधी कम्स एंड टेल्स गांधी, गांधी जी, इट्स सच ए ग्रेट विक्ट्री दैट थ्रू आवर अहिंसा, द पाथ ऑफ अहिंसा, वी हैव अचीव्ड इंडियाज इंडिपेंडेंस टुडे, इट्स ए ग्रेट विक्ट्री. गांधी खिन्न होकर कहते हैं, यस माय फ्रेंड, बट द जनरल इज डिफीटेड. ठीक है, आपको जीत मिल गई है, बट इस युद्ध का जो जनरल नेमली गांधी है, गांधी हार गया है. तो मैं ये कह रहा था कि ये जो पार्टीशन के समय जो निर्णय हो गया था, वो कोई लॉजिकल जिन्ना को क्यों दिया गया है, क्यों नहीं पूछा गया है. मैं तो मेरे किताब में बहुत चर्चा किया था कैसे उनको ताकतवर बनाया गया. 1940, I should not be taking more of your time. Please read, there is one full chapter. Nationalists divided, Jinnah got the strength. So many incidents. सिंध में, भाई साहब सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध में एंटी जिन्ना सरकार थी. डू यू नो किसने गिराया उस सरकार को? मुस्लिम लीग ने गिराया. मुस्लिम लीग को सपोर्ट दिया कांग्रेस ने. दिस वॉज इन 1939. भाई मुस्लिम लीग देश का विभाजन चाह रहा है, उसके साथ हाथ क्यों मिला? क्या है? प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स बोला गया है. तो कई ऐसे अपराध हुए, गलतियां हुई, जिसके चलते जिन्ना उभरा. नॉट नेसेसरीली बिकॉज पीपल वर बिहाइंड हिम. 1945 इलेक्शंस में भी 2 प्रोविंसेस छोड़कर, आउट ऑफ 4 मुस्लिम प्रोविंसेस, ओनली 2 प्रोविंसेस में लीग को सिंपल मेजॉरिटी मिली. बाकी जगह बाकी लोगों का समर्थन से ही वो सरकार बना पाया. इनफैक्ट 45 में जिन्ना अपने मित्रों को कन्फेस करता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे को पाकिस्तान मिलेगा, पर कम से कम डिमांड करने से एक भाग पर मेरा आधिपत्य होगा. ही वॉज नॉट श्योर दैट पार्टीशन वुड एक्चुअली हैपन, बट हुआ. सो जिन्ना को किसने बनाया है? सबने बनाया. 1944 में गांधी जेल से बाहर आए, जिन्ना के घर पहुंच गए. 17 दिन रोज गए, 17 दिन. गांधी जिन्ना को कहते हैं कैद आजम. कैद आजम का अर्थ होता है ग्रेट लीडर. ओ ग्रेट लीडर जिन्ना, ऐसा बोलते थे. जिन्ना गांधी जी को मिस्टर गांधी बोलता था बस. फिर भी माना 17 दिन गए, 17 दिन रोज गए, रिक्वेस्ट किए, नहीं पार्टीशन मत छोड़ो छोड़ो छोड़ो. 17 दिन गांधी जी जाने के कारण जिन्ना तो अपने जिद से तो निकला नहीं है, पर जिन्ना बड़ा हो गया. पर क्यों गया? बट इसमें इतिहास में इफ्स एंड बट्स नहीं होते, पर गलती हुई है, परिणाम हमको लेना होता है. हिस्ट्री हैज नो इफ्स एंड बट्स, रिमेंबर. हैड ही नॉट गॉन देयर, वो होता नहीं हिस्ट्री में, ही हैड गॉन. समय की थोड़ी कमी है, एक आखिरी प्रश्न लेंगे. मैम है यहाँ पे. बाकी सबसे अनुरोध है कि वो सर के साथ बाहर इंटरेक्शन कर सकते हैं, प्लीज़. थैंक यू. In this great volley of teachers and lecturers, my introduction, Mrs. Shobha Sharma, retired
एसोसिएट प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। मुझे ज्योति जी ने आमंत्रित किया तो आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद प्रोफेसर राम माधव जी को, मैं इनके आर्टिकल पढ़ती रहती हूँ, पुस्तक लिखी। और विशेष धन्यवाद वाइस चांसलर साहब जी को, जिन्होंने बड़ी जल्दी से उसको हमें इस प्रकार से समझाया क्या करना है। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, उसका नाम है विभाजनकालीन भारत के साक्षी। आप में से बहुत सारे जानते हैं। इसके 4 वॉल्यूम प्रिंट हुए हैं और इसके लेखक हैं कृष्णानंद सागर, नोएडा से जागृति प्रकाशन से उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। माधव जी ने हमें सारी घटनाओं का क्रम रखा। हमारे सबको ज्ञान होगा जो हिस्ट्री वाले हैं, जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, परंतु 1947 के पार्टीशन का होना और उसके ऊपर इस प्रकार के प्राकथन का लिखना, ये इस पुस्तक का प्रमाण है। मैं माननीय वाइस चांसलर साहब जी को आकर उनके ऑफिस में इन 4 वॉल्यूम्स को भेंट करूंगी और राम गोपाल जी को भी करूंगी, क्योंकि राम माधव जी के मैंने आर्टिकल पढ़े हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पुस्तकों को पढ़ के माध्यम से मुझे ये पता चला है कि जब पार्टीशन हुआ था तो मेरे ख्याल 20 लाख भारतीयों की हत्या हुई थी। उस हत्या के वर्णन इसमें आप पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे कि उस वक़्त हम इस बात पे तुले थे कि हमने मुसलमान नहीं बनने देना। माएँ कहती थी लड़कियों को काटा गया, इसके प्रमाण है इसमें कि मेरी मदर कहती थी मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी ऐसा, क्योंकि पिता थे, अंडरग्राउंड थे। फिर उनको जेल हुई। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जालंधर आए। उन्होंने कहा मैंने कश्मीर जाना। मेरे फादर ने कहा श्री गोपाल चंद्र देव जो नहीं है कि इस वक्त स्थिति ऐसी है आप मत जाइएगा, पर वो गए और उसका क्या हाउस अरेस्ट हुआ, उनको पेंसिलिन दी, उनका देहांत हुआ। ये सारी घटनाएं हमारे सामने हैं। पर ये मैं कहूँगी कि इस प्रकार ये जो पुस्तक छपी है बहुत अच्छी है, पार्टीशन फ्रीडम। हमें इन घटनाओं को याद रखना है और आने वाले समय के लिए बताना है कि ऐसी घटनाएं ना हो। कल ही मैं किसी जगह थी, उसमें मैंने कहा ये जो गला कटा है ये क्यों कटा, तो एक मुसलमान कहता है कि नहीं जो कन्वर्ट है वो काटता है, दूसरा कहता है नहीं जो मदरसे में जाते हैं नहीं जाते इसलिए वो उनको सिखाया जाता है। हृदयों को जोड़ने की जहाँ तक बात की है उसके लिए अभी बड़ी गहराई है। हम हृदयों को जोड़ना चाहते हैं, परंतु उसके लिए विद्वत समाज और शिक्षक समाज ये कर सकता है। मैं अपने विचारों का फिर कभी उद्गार प्रकट करूंगी और धन्यवाद देती हूँ राम माधव जी को और ज्योति जी को। प्रश्न है इनसे? प्रश्न नहीं With this last question, we solemnly come to an end with this emotionally charged event. On this note, I heartily thank Shri Ram Madhav ji for taking the thought forward with his narratives on partition freedom. Your words, sir, henceforth shall echo in many hearts and minds and inspire many to bring forth hidden truths that await to see the light of the day. No words would be enough to thank our Vice Chancellor, sir, for his inspiration, motivation, compassion, and support always. He always stands as a backbone to our ideas and thoughts and encourages the great matter to read all that is black and white. I also convey my gratitude to Director South Campus, Professor Shri Prakash Singh ji, for visualizing this event. Thanks are also due to the Joint Director, South Campus, Shri Sanjeev Singh ji, and our Honorable Registrar, Vikas Gupta ji. I also convey my gratitude to our esteemed audience for their benign presence. Much, much, much gratitude goes to all the non-teaching staff and Karamcharis for all their support in stage maintenance, sanitation, and always being there on a standby mode for every help and assistance. My special thanks to student volunteers Ankita and Ajit today afternoon. With this, we come to an end to this wonderful program that we've just been a witness to. जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि ए वतन मेरे वतन आज़ाद रहे तू, मैं रहूँ या ना रहूँ आबाद रहे तू। वंदे मातरम। All of you are kindly requested to join us for some refreshments. Thank you so much.